Good morning, friends. This video on one of the important judgment coming from Hon'ble Supreme Court in the case of Northern Operating Systems Private Limited. As per this judgment, secondment of employee by overseas foreign group company to Indian company, it's falling under supply of manpower services and service tax is leviable. Important takeaway from this judgment. The first important takeaway, though we have seen that we normally argue that seconded employee and Indian company is employee and employer. That is the relationship they are enjoying, hence out of service tax net. That's what we all debate. And this is the important issue in GST as well. If it is agreed that they are employee and employer, then GST also not leviable as per Schedule 3 transaction under the CGST Act. But Honorable Supreme Court has relied on substance over form doctrine, and whereby they have concluded that these overseas group companies are sending the employees to Indian company to secure contract, and these contract can be secured only by highly trained personnel, and for that reason they are sending the employees to the Indian company. So they have gone into the substance over form and they are saying this is quid pro quo. It is contract for service. Hence they have not agreed for the argument of employee and employer relationship. They have further seen the contract and said that such seconded employee and this Indian company will not be having employee-employer relationship once this secondment period is over. So they have really relied on this doctrine, substance over form. They have said it's a contract for service quid pro quo, hence chargeable to service tax. Under supply of manpower services under reverse charge method in the hands of Indian company. Having said that, there was another argument, an important argument, reverse charge method, that RCM is applicable in the hands of Indian company if they pay RCM liability of service tax. That credit would be available, and that is again they can go for filing refund claim. Honorable Supreme Court has not considered this view that RCM subject to revenue neutrality, hence this chargeability does not going to impact or affect at all. So RCM argument with the revenue neutrality is not being considered by Honorable Supreme Court. Last and foremost, the relief which is being granted for the extended period of limitation. Demand is being confirmed for the normal period of service tax under supply of manpower services under RCM. Only relief granted that extended period demand should not be invoked. Having said that, what is the GST perspective? As we all know that employee and employer relationship is out of GST as per Schedule 3 transaction. Neither is supply of goods nor supply of services. But in this judgment, Honorable Supreme Court has relied on document, substance over form. So you have to go back and check your contract terms. What they have seen, the Honorable Supreme Court has seen that this contract is being done to secure contract by deploying highly trained personnel in India. And that is the reason they have said it is a contract for service, quid pro quo, chargeable to service tax. An employee-employer relationship does not exist.
So important takeaway for all of you, those who are into such transaction where secondment of employees is happening from overseas group company to Indian company, kindly go back and check for what purpose they are being seconded, for what purpose they are being deployed with the Indian company. If there is contract for service, that's what it is coming out, then this Honorable Supreme Court judgment going to play important role. Service tax applicable under RCM, similar is the case you will find under GST as well. So important digest would be go back to your contract, check the transaction, check the terms in the contract and see the arrangement. What kind of arrangement is being made? It is really employee and employer relationship, or it is with an objective of quid pro quo, contract for service. So this is what the important silver lining from this Honorable Supreme Court judgment. In Hindi, Honorable Supreme Court ने इस नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में ये कंक्लूड किया, जब ओवरसीज ग्रुप कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को डिप्लॉय करती है, सेकेंडेड करती है टू इंडियन कंपनी, देन it would be falling under supply of manpower services और उस पर सर्विस टैक्स लगेगा under reverse charge method in the hands of Indian company. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट टेक अवे जो इस जजमेंट में रिलाई किए गए वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसको रिलाई किया. उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को देखा, अरेंजमेंट को देखा. उस कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि दीज हाईली ट्रेन्ड पर्सनल आर बीइंग डिप्लॉयड बाय ओवरसीज ग्रुप कंपनी टू इंडियन कंपनी टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट. तो उन्हें कहा इट इज फॉर क्विड प्रो क्यो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का आर्गुमेंट भी नहीं माना, क्योंकि they are not going to enjoy this employee and employer relationship once secondment period is over. So this argument was also not considered by Honorable Supreme Court. Since RCM की liability थी, so revenue neutrality का भी point उठाया SEC ने कि revenue neutrality है, मैं RCM पे करूंगा तो मुझे क्रेडिट मिलेगी, फिर मैं रिफंड क्लेम करूंगा. इस आर्गुमेंट को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. एंड क्वाइट ऑब्वियस, आरसीएम में आपको मालूम है जब रिवर्स चार्ज में एज ए रिसिपिएंट आप पे करते हैं, चाहे सर्विस टैक्स है, जीएसटी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड है. इवन तो आपको क्रेडिट मिलेगी. जब टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड है विद अ चार्जेबिलिटी और हम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे आर्गुमेंट करें, टू सर्टेन एक्सटेंट वी हैव टू लुक एट चार्जेबिलिटी एग्जिस्ट करती है आरसीएम में फॉर स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज. आप पे कीजिए, क्रेडिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट आप रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे अगर आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ मुझे क्रेडिट मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है, आप ऐसे ही कहेंगे. लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब आरसीएम की लाइबिलिटी है तो एज पर टाइम ऑफ सप्लाई और पीओटी आपको पे करना है. अगर आप पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, पेनाल्टी की लायबिलिटी है. अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे चले जाएंगे तो फिर तो आरसीएम की लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना. इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कहा, क्विड प्रो क्यो कहा, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को भी नहीं माना. रिलीफ ये मिली कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जो डिमांड थी उसको उन्हें आउट कर दिया. फॉर नॉर्मल पीरियड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड सर्विस टैक्स चार्जेबिलिटी एग्जिस्ट अंडर सप्लाई ऑफ मैनपावर सर्विसेज ऑन सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय ओवरसीज ग्रुप कंपनी टू इंडियन कंपनी, एंड दिस सर्विस टैक्स टू बी पेड अंडर आरसीएम. सिमिलर डिस्प्यूट आपको जीएसटी में भी मिलेगा. आपको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेकंडमेंट होता है आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन अब रिलाई किया गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है?
and contract के हिसाब से then this is going to be decided. But now this is Supreme Court judgment, it is supply of manpower services. But still you can go back and check your contract and agreement. क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ये देखा गया ओवरसीज ग्रुप कंपनी इज सेंडिंग द एम्प्लॉय हाईली ट्रेन एम्प्लॉय टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज द रीजन इट इज बीइंग स्टेटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्विट प्रो क्यो. सो यानी आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप इसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मानते हैं, प्लीज चेक इट आउट, revisit such contract and check how it is different from contract for service. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.